Audible? Yes, you are audible. Yeah. Hi, Yogiraj, you are also audible. I'm audible? Hi. Oh, Yeah, Yeah, you you are both audible. are audible. great, great. So, how was Avaz? How are you? I'm fine, Yogi. I'm fine, Yash. I'm fine. How are you? I'm good, I'm good. So we will. What's up, Yogiraj? We talked on phone Yeah, last I'm night. fine. Yes, yes, yes. I'm great. So I think we should start now. Yeah, great. Okay. So hey everyone, Sure. myself Abbas Fathan. I am the programming lead of CodeChef SCOE Chapter. Thank you all for joining. I would like to welcome you all in our latest edition for Placement Talks. So we have two wonderful guests with us, Yash Dewangan and Yogiraj Gutte. We will be introducing them. But first of all, there are some house rules that we must follow. As many of us have gone through COVID pandemic, and we all know the ill effect of leaving our mic and video open. So I request you all to turn off your mic as well as cameras. Feel free to type your question in the chat box. Our executives will add that in the Q&A, which will be held at the last of the event, if the time permits. So yeah, the flow of the event will be something like this. In Rohan, just give us a Yeah. second. Then the slide. Yeah, sure. Is my screen visible? Yes, Yep, yep, very, yep. very, It's very. visible. It's visible. Okay, so the flow of the event will be first we will be having the introduction of our guest. Second, there will be most frequently asked question, and last. Of 12 LPA. Apart from that, he has also done his internship at EQ Technologic. Anything you want to add in it, Yash? Prior to this, I was intern also with EQ Technologic. I was working with internal application team where I was exposed to two of the major application which we are working on. First is quotation to invoice, and the second is project center. Both these are the client facing projects, so I have worked on it. Yeah. I just That's graduated also from SKM CUA with Yogiraj. Yogiraj was in SUA, I guess, and I was in Yeah. yeah, SKN, right? that's great to hear. That's great to hear. So I think we should start with the questions. Yeah, sure. Yeah. So I think the first of all we will ask the most basic question, like how was your hiring process at EQ Technologic and how was your interview experience? Yes. We will start with Yash and then Yeah. we will Yogiraj, you can add on it. So it Sure. was the month of June, I guess, last year, 2021, and I got a mail from the recruiter about aptitude test and the normal coding test, which was on the online assessment. So the first section was on purely on aptitude. 14 questions were there, and 14 minutes was given to us, all the candidates. I was able to solve around 10 to 11 questions in 14 minutes, and the next section was about data structure and algorithm. The level of question was about easy, and I was able to solve the question around 10 to 15 minutes. But I want to add one point in this section over here. You can't use STL. MCAT platform is too old to use uh,
too old, I must say. They don't allow us to use STL. So if you are using STL, so be ready to write some extra code over here. Like if you want to sort a particular list, and the time complexity will be n square, so you have to write a merge sort, I guess, if it allows. And the next day, I got the list that I've been shortlisted for the interview round. The first round was based on my technical round, based on my data structure algorithms, SQL database management system, and some OOPS concept. And in the last, I was not prepared for that, but it mainly asked me to design a system design in a low level. So I with the help of that software developer, he will help me a lot during the interview in this part. So I was able to design a mid-level design of that particular problem. That's it. And the next interview was at around evening, I guess. Yeah. So it was taken by one of the software architecture from the company. And in this interview, I would say I find it difficult because the question based on the real life example and the situational question. The situation based on that, they directly don't give you a question. They first give you a situation. Based on that situation, you have to how you will approach the question, and based on that your approach, you have to solve a question. And after telling the approach, you have to write the code actually. Both for the same like SQL, I have to do the same, and OOPS section, I have to do the same. And interview went around, I must say, 1 hour and 30 minutes. That's it. And the next day, I got a call from HR that I be selected for the last round. That is HR plus technical. The HR started with a normal question like HR, what are your hobbies and something like that, and what will where you will see in 5 year yourself, something like that, a typical HR question. And the last part of section, he gave me a question. He wanted to check in this question like how good I am understanding the question. Like uh, based on my assumption, I saw that in the interview that the HR want to check that if I hired me in the company, so if the software lead have given me a task, so how well I can approach the problem, how well I can understand the problem. Like if I suppose give you a situation like let's suppose I have hired a boss in my startup, and I have given a task to a boss, right? So turn on your mic, Abbas. Let's have a Q&A session for you. Okay, okay, okay. It's a backfire on you. Huh. Oh, Okay. So let's suppose I have given you a question. I have given you a question and have to given a time of 2 days to solve the question. So what will the first thing you will do? You will try to read the question, understand the problem, and based on the problem, you will think of your approach. yeah. Okay. So I was given this type of task. On the approach, I have to write the code. And if you find something difficult to understand, he will call me back, or he will try to optimize the code or do some little changes over there. So based on that, it will be a managerial round, I would say, HR plus managerial round. Many people think like it is a technical question. It is not a technical question. It is a managerial round. I must say. Oh, yeah, that sounds tough. And in the night, I must suppose 9 o'clock in the evening that day. Also, I got a list that me and other six are selected for the EQ Technologic as an intern. Yeah. Yeah, that's great. That's great. Yogiraj, now your turn. Sure. So Nvidia had 3 rounds in its process. Nvidia came 3 times in our campus, and when it came third time, it was 2 months before our final examination. So in the 8th semester, and I applied there. And the first round was online assessment. It was on Hacker Rank. There were some aptitude questions, basic aptitude questions. Then there were some technical questions on OOPS, CN, OS, these subjects. Then there were some code output questions. So the difficulty level was not very high. It was like easy to medium level. And about 1 week later, we had our first interview. It was a technical interview, and there were again same questions on DBMS, OS, like CS fundamentals.
And there were questions on coding like how to implement stack using a queue and vice versa, or some pattern printing questions. They were easy to medium level questions, and some like LCS questions also. That was second round. It lasted for 1 hour, and in that they also discussed some like something about my resume. Like I had mentioned somewhere about REST APIs. They asked me about it and what are the standards, and like some discussion was there. Then 1 week after that, we had managerial round. So in this round, they totally asked me questions about my internship experience and whatever projects I had mentioned on my resume. And they basically they wanted to see whether I have done all that or not. They wanted to verify the authenticity of whatever I was mentioning on my resume. They asked me like for example I had mentioned React and Angular in my resume, so they wanted to know how much depth I have in both of those technologies. So they asked me like what is the plus point of React over Angular and vice versa. So they dived deep into it. And there was some discussion about the role also, SDET role. So what happens, generally people avoid the SDET role because it is not so good as compared to the developer role. So there was some discussion about it, and I asked them how a developer would be beneficial to this role, and we had some discussion on that. So it was also medium level interview, I would say, not very difficult. Okay, okay, that's great to hear. So as both of you mentioned that one of your round, well, as Yash also mentioned that you cannot use STL. And so for those who don't know, STL stands for Standard Template Library, in which pre-written codes like sorting algorithms and linked list is there. So how did you cope up with it, Yash? Like if you didn't have STL, so did you write all the codes for sorting by yourself? Yeah, like for some test cases, it is working for like I was using bubble sort first, so it was working for some test cases, but then I realized that it will not work for the large values, so I wrote down the merge sort after that, after getting TLE. Okay, okay, okay. Guys, one more thing. I have posted my detailed interview experience on the chat. You can check that. We will also put the detailed interview link on the YouTube description, so you can check it out. Oh yeah, that's great. That's great. So moving on to the next question, as I think many companies have this round in common of taking the aptitude test. Yeah, in on campus, I guess, not in Yeah. on off campus. So how did you prepare for it? Like, what did you do to get good at aptitude? Like I would say, I have just practiced it for last 15 days from India Bix. I just got to know the basic tricks like how can uh, how can individual can solve the question in less time. So I followed some channel like 5 Minute Engineering for Aptitude. It is a very good channel to follow, and you can solve the question from indiabix.com. Okay. As for you, Yogiraj? See, aptitude rounds are mostly taken by the service-based companies. Most of the product-based companies do not take aptitude round. So, and I was very good at aptitude from the beginning only. Like I had taken some competitions on that, and I knew that I'll be able to do. And in the before the placement start, the college itself provides us some training about aptitude. They take some assessments, so you get practice. You get practice from that. And I would suggest everyone to take 1 or 2 assessments of aptitude. If you see that you are scoring more than 80%, you do not have to study. You do not have to practice it more. Like you can do it in the 10 to 15 days, and you can also visit YouTube for some tricks for like some questions are there like time based questions. Like there are some tricks for that, so that will improve your time in solving aptitude questions. Yeah, one more thing, just excellent point by made by Yogiraj. Like, don't give too much time on aptitude. Focus on the other part like core subject and data structure and algorithm that are important. Like aptitude is not that high level types, so don't waste too much time on that. Rely on like core subjects and DSA mainly, and project too. Yeah, okay. I think all the types of question that they ask are around easy to model, right? Right, right, right. You just need a See, speed and you need to know the tricks. How can individuals solve them fast? Just.
Nothing else. Like all the companies have almost similar level of aptitude questions, but I had participated in the drive of Goldman Sachs. That company asks very high level of aptitude questions. So if you want to try for that, you should prepare accordingly. Like you can go through the examples; they are very hard compared to other companies. Yeah, Oh, Goldman Sachs specifically, right? Yeah. yeah. Okay, so I think we should move on to the next question. I think this question is mainly for the beginners. Like, how do we start with the coding? Should we start with the DSA part, or we should move on to like development or a mixture of both at the same time? Yogiraj, you go ahead, then I'll Yeah. Okay. complete that. See, like beginner in the sense, if you are in the first year or second year, you should start with DSA only. You like when you practice DSA questions, you will get more hold on that language. You have to get expertise over at least one language before you start development. So through DSA, you will be able to do that. You can practice anywhere on HackerRank or LeetCode or anything. And after maybe when you get very comfortable with that language, you can start learning the frameworks that are there. For example, in Python, there are frameworks like Django. In Java, there is Spring Boot and all. When you learn those frameworks, you will be able to start development, and then you can begin your projects. That's how you can do. Yeah, excellent point made by Yogiraj. Like, I just want to add one more point. Like, there are two types of people in colleges. Like, I must say, categorization is not good, but let's say categorization. First is like ITCS, and second is non-ITCS. So, non-ITCS people have to do more hustle than ITCS, I guess, because they have to follow their circular also. Like, they have particular branch, and if they want a job in IT sector, they have to also follow the circular for the IT and CS. So I must say, if you want to become a good software engineer, you should have a good knowledge of all the fields, like making a project, whether it DSA or CP. Like you should also do CP because it will reduce your limits how you can think. It will give your mind some basic technique you can solve any question in particular time, and DSA will only gives you just algorithm type. You will after a time, after solving particular question, you will finding the same pattern in the DSA. And in development, start doing projects in from first year, second year, it doesn't matter, but start doing. At least you should have 2 to 3 project in your resume which can solve. If they are solving a real life problem, that's the best. But if 2 3 good projects are enough to put in the resume for the freshers. Yeah, so I think a side question to this, like this happens to me a lot. Like consistency is a big issue. Like we do coding with sit one and do coding for like 3 to 4 hours, and for a couple of for 3 to 4 days we don't do anything. Right. So how did you manage it? Like I just say that don't make a burden of it. Just take small steps. Like if you are working on an algorithm, read the algorithm, understand the algorithm, solve one question or two question, and revise it. Like if you do revision time to time, that's it. And stay consistent is like if you don't want to do it, then don't do it. Exactly. Yeah, I think that's तो a मैं बोलूंगा यार, डेली क्या बोलते हैं, अगर आप एक या दो क्वेश्चन भी कर रहे हो एक कंसेप्ट समझ के, तो चलेगा ना। मतलब डेली अगर एक क्वेश्चन भी करो तो 30 दिन के कितने 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट मंथ आप दो क्वेश्चन कर दो तो नेक्स्ट मंथ 60 क्वेश्चन, 2 महीने में 90 क्वेश्चन हो गए। तो धीरे धीरे होती है यार। मतलब एक बार में ऐसा नहीं होता कि हम दिन में 15 15 क्वेश्चन कर रहे हैं या कोई 15 15 एल्गोरिदम। मतलब एक एक एल्गोरिदम करो, धीरे धीरे आ जाएगा। वो You तो can yeah. do मतलब only for 3 to 4 hours. Like more than 4 hours if you are doing DSA only, it पूरा exhaust हो जाते हैं अपन. Like बहुत उसमें हाँ, frustration आता है. मैं बोलूँगा मतलब और सबका डिफरेंट डिफरेंट माइंड है। मतलब जिसको जितना, मतलब अगर मेरे को 1 आवर ठीक लग रहा है तो मैं 1 आवर में भी अचीव कर लूंगा, किसी को 6 आवर भी कम लग रहे हैं। तो अपना अपना होता है यार, अगर आपको जितना टाइम मिल पा रहा है। कुछ लोग को ऐसा होता है कि 2 3 महीना तक लगातार कर रहा है, मजा आ रहा है, मतलब उसके बिना काम ही नहीं चल रहा है, तो वही कर रहे हैं दिन भर। तो वो धीरे धीरे आते हैं यार। मतलब आपको स्मॉल स्टेप्स ही लेने पड़ेंगे, एकदम से नहीं होगा कि दिन में पूरे
पूरा आज डीएसए खत्म, एरे से लेकर ग्राफ पूरा खत्म कर दिया। धीरे धीरे होगा। Yeah, I think that sums it up. और Next. किसी को अगर मान लो अगर किसी को डीएसए नहीं पसंद है यार, प्रोजेक्ट्स में आ जाओ, प्रोजेक्ट्स में भी बहुत अच्छा खासा हो जाता है। स्टार्टअप्स आजकल क्या होते हैं, मेनली प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे ही लेते हैं, मतलब आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं और पास्ट एक्सपीरियंस, और फ्रीलांसिंग में भी आपको अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। डीएसए इन जावा और सीपी विच इज बेटर, लाइक आपका गोल क्या है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो प्रेफर कर लो, लैंग्वेज डजंट मैटर until unless your logics are good. Yeah, so हम next question लेते हैं फिर. हाँ. I think ये question जो है वो सबका नाइटमेयर है कि क्या चूज करें, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट. Yogiraj, go ahead. See, both have their own importance. Competitive coding will help you in getting your first good job. Okay, it will not be very useful in your career actually. So if you do competitive coding regularly, you'll get a very good first job like compared to your peers. And when you should focus more on things like design patterns that come under development. Many people do not focus it. There is a subject in our syllabus also about design patterns. So this is much more important to be a good engineer, if you see. And like for on campus interviews, competitive coding will be a like very big thing. If you practice DSA questions on lead code also regularly, you will be able to clear most of the jobs. There is no problem. The only thing competitive coding will help you with is to manage your time during the online assessment or that thing. अब इसमें कैसा, क्योंकि किसी किसी को पसंद नहीं आता कॉम्पिटिटिव कोडिंग, मतलब ट्राई करते लेकिन पसंद आता नहीं है, then you can go towards डेवलपमेंट. उसमें भी आप अच्छा खासा टेक्नोलॉजीज को सीखो, उसको उसमें डेवलप करो खुद को. those are two ways. Like in my opinion, I would say अगर आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो तो दोनों को ट्राई दो यार, मतलब आप एक्सप्लोर करो चीजों को, कि आपको भी नहीं पता कि आप किस लिमिट तक जा सकते हो। लाइक अगर मैंने डेवलपमेंट पकड़ी है, या फिर मैं अब्बास का एग्जांपल लेता हूँ, अगर अब्बास ने डेवलपमेंट पकड़ी है, उसने पूरा 6 महीना 1 साल दिया डेवलपमेंट में और बहुत अच्छा हो गया, प्रोफिशिएंट हो गया, तो वो उसमें अपना करियर बनाएगा यार, सीपी में क्यों आएगा। बट अगर उसने सीपी करी, शुरुआत में उसकी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं थी, 2-3 महीना किया, बहुत घिसाया, धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ और इम्प्रूव हुआ, 1 साल में क्या बोलते सीएफ में मास्टर बन गया, तो धीरे धीरे क्या बोलते कभी ना कभी ग्रैंड मास्टर ही बन जाएगा। तो वो धीरे धीरे होती हैं चीजें, आप एक्सप्लोर करो टाइम टू टाइम। कभी कभी आपको भी लगता है कि कोई कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करेगा तो उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, बट एटलीस्ट टाइम दो, 3 से 6 महीना दो। मतलब ऐसा नहीं कि 1 महीना दिया फिर उसमें छोड़ दिया, ऐसे नहीं, 3 से 6 महीना दो, टाइम दो। रिजल्ट मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, कंटिन्यू रखो, रिजल्ट नहीं मिल रहा तो चेंज कर लो फिर, ऐसा। आई थिंक तुम्हारी जो कहानी थी वो सच है. मैंने ट्राई किया था सीपी. आई थिंक आई ट्राइड इट फॉर 2 to 3 months. रैंक बहुत फॉलो रहा था, तो आई थिंक आई गिव अप. मैं थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ, बट डेवलपमेंट मोस्टली. नहीं नहीं, गुड गुड, But मतलब अपना अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। या वो सब इट्स पर्सनल, लाइक राइट। सबका अपने उसके ऊपर है कि कौन but क्या. if you are not doing CP, then it doesn't mean you should give up on DSA also. DSA बहुत नहीं, important है. डीएसए इज राइट। इम्पोर्टेंट. हाँ, like go through the interview questions of Amazon or Microsoft. You will see that there is a pattern. एक ही क्वेश्चन, मतलब कुछ डीपी पे रहते हैं, ग्राफ पे रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न फॉलो करते रहते हैं वो. If you are preparing that, it is enough for like most of the interviews. राइट। Yeah, I think that's great to hear. So next question. Sorry. So, what is your view in participating in competitive programming contests, and how does it help you in placement? Like I would say, I started my first CP contest in around second year. I was giving a contest on, I think, CodeChef itself, right? CodeChef or Codeforces, I don't remember. So I was not able to solve a single question that day, but I go searched on the YouTube that the editorial, and got to know that we can solve this question using maths or O of one time complexity. So CP contests tell me that the basic question are based on maths. So I started CP contest, देता गया, एक टाइम के बाद ऐसा हो गया कि एक क्वेश्चन बनता था, दो क्वेश्चन बनते थे, फिर धीरे धीरे बनने लगे, रैंकिंग भी ऊपर गई। बट फिर एक टाइम के बाद एक स्टैग्नेंट पॉइंट आ गया, तो उसके बाद मैंने फिर छोड़ दी। बट सीपी कॉन्टेस्ट से मुझे क्या होता है, थोड़ा टाइमिंग का क्या बोलते हैं, काफी इंप्रूवमेंट हुई। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व कर पाता था कॉन्टेस्ट के टाइम।
तो उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुई. Yogiraj, for you? Mm, Actually, I had no idea about CP in my first or second year. I got familiar with it in third year only. Uh, but same चीज़ है like थर्ड ईयर में मुझे कुछ अलग चीज़ें पसंद आने लगी like मशीन लर्निंग एंड ऑल, तो मैंने इतना सीपी पे कॉन्सेंट्रेट किया नहीं. बट उसकी कमी मुझे कब रियलाइज हुई जब मैंने कुछ कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया, लाइक हायरिंग कॉन्टेस्ट आर देयर. व्हाट दे डू इज दे टेक फर्स्ट 2 or 3% of the qualifying people, and they give them interview chance. तो जब वैसे कॉन्टेस्ट होते तब लाइक सीपी काम आता है, तब आई यूज्ड टू फेल इन दोस कॉन्टेस्ट. तो वहां पे काम आ सकता है सीपी, बट आई हैव नेवर ट्राइड इट इन इन एक्सटेंसिव मैनर. Like I would say, if you're a software engineer, just give it a try in all the field, like whether it's development, CP or DSA, just give it a try. Stay consistent, and if it giving you result, that's good. Not giving result, give up. Simple as that. Yeah, I think Not give up, just leave it. I would say give up. It is not an appropriate word. Yeah, but like to be a good engineer, you should know about development a lot. You know, Right. like how to make good modules, कोड को modular कैसे बनाएं, कितना, that those things are very important when you face the real world. Right. Yeah, so that's it. Thanks for the answer. So moving on to the next question, we have Rohan, science change. Like what are some of the topics as well as subject that will be very important during placement, especially in our college? Like first of all, for C++, learn STL, and for Java collections. That's a very important tool. Like ये आपके भगवान है, मतलब इंटरव्यू में या फिर क्या बोलते हैं कोडिंग राउंड में. अगर आपको ये नहीं आता तो फिर तो बहुत दिक्कत हो सकती है. ये तो आना ही चाहिए. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है. और फिर बेसिक आप कॉन्टेस्ट देते जाइए. और टॉपिक्स में मैं बोलूंगा एरे, स्ट्रिंग, जो बेसिक बेसिक है वही करते जाइए. योगीराज, यू वांट टू ऐड अ पॉइंट? See, the CS fundamentals तो बहुत important है उसमें, like राइट. DBMS, OOPS, तुम्हारा OS. CN पे इतना क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, लेकिन वो प्रिपेयर करके रखो, बहुत यूजफुल रहता. एंड लाइक DBMS में भी कुछ चीजें होती है, नॉर्मल फॉर्म्स और लाइक एसिड प्रॉपर्टीज, ग्रुप प्रॉपर्टीज. दो क्वेश्चंस हर एक कंपनी क्वेश्चन पूछती है उन टॉपिक्स पे, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स रहते हैं, आप करके रखो. एंड OOPS में भी लाइक इंटरफेसेस, सब्सट्रैक्ट क्लासेस, ये चीजें कुछ कुछ लोग छोड़ देते हैं, प्रिपेयर नहीं करते. मेनी क्वेश्चंस अरेस्ट फ्रॉम देम, एंड बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, वो भी करो. लाइक ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्प्रॉपर है, बिकॉज कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है. तो मैं ये बोल दूंगा कि आप इस क्वेश्चन के लिए ना, जब आपका शॉर्टलिस्टिंग हो जाए और इंटरव्यू के लिए आप रेडी हो, तो पर्टिकुलर सीनियर को उस कंपनी में जो प्लेस हुआ है उसको कांटेक्ट कर लो, या फिर ग्लासडोर या फिर जीएफजी में जाके इंटरव्यू एक्सपीरियंस रेफर कर लो, ताकि आपका फिल्टर हो जाए आइटम्स की आपको क्या पढ़ना है. Correct, I think. Yeah. So we will have the next question. Rohan? No, it's not. Oh, yeah, yeah, it's visible. It's visible. Okay, so we will spend time on this question a bit more. How was your internship experience, and how did you help it? How did it have an impact on your placements? Like I would say, I started applying for internship in my uh, fifth semester. After my fifth semester, in the sixth semester, I started giving interview for many startups and companies, but I was not able to solve any single question on the interview or in the online Okay. assessment. It was a pretty bad experience, but I got to know about what field I have to work and what type of question I am lacking on, what type of thinking I should get on to my logics. That's it. And about my internship experience at EQ, it was great. I was learned very different concept, and I got to know about the how corporate world works on the development of these flagship products. So it was a great experience, I would say. As for me, like
I applied for many off campus internships, but वो टेस्ट लिंक कभी भेजती नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम होता है ऑफ कैंपस में. But so I never got internship through that way. What happened is during our college placements, I got job offers from two companies, and they were also offering internships. So I went for their internships. I worked with them, or like it is very helpful, like you get to study industry standard code कैसे लिखते हैं, वो चीजें तुमको समझती है. Right. और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक फॉलो होता है ना कंपनीज में, लाइक पाइपलाइंस रहती है, गिट कैसे काम करता है, वो चीजें तुमको काम आती है. और ये एक्सपीरियंस बहुत काम आता है. लाइक ड्यूरिंग प्लेसमेंट, ड्यूरिंग योर एक्चुअल प्लेसमेंट, दे प्रेफर स्टूडेंट्स हैविंग इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, क्योंकि लाइक हैविंग समथिंग इज बेटर देन हैविंग नथिंग. Right. Yeah. Yes. But yeah. Go on. Yes, you said that you failed some of the placement or internship rounds. So how did you cope up with that? Like it is a part of the journey. You have to deal with it. Like rejection. Okay यार, मतलब चलता है. अगर रिजेक्शन नहीं आएगा तब तक सीखोगे नहीं, तो वो तो चलता है. और थर्ड ईयर में आप कितना ही अपने आप से एक्सपेक्ट कर लोगे कि मेरे को ये कंपनी फोड़ने. धीरे धीरे होती है चीजें. ठीक है. तो मतलब देता गया इंटरव्यू, कुछ कंपनी में सिलेक्ट भी हुआ, बट वहां पर पैकेज इतना कम था कि मैंने फिर EQ ही प्रेफर किया. और ये जो कंपनीज थी, लाइक सम ऑफ देम ऑफ ऑन कैंपस आती है अपने कॉलेज में? नहीं, ऑफ कैंपस ही. मैंने लिंक्डइन के थ्रू रेफरल मांगा था, और इंटर्नशाला और angel.com. ओके. योगिराज, एज फॉर यू, तुम ऑफ कैंपस लिया था कि नहीं ऑन कैंपस लिया था? मैंने भी ऑन कैंपस ही लिया था. दोनों परसिस्टेंट और उर्चोलो दोनों भी ऑन कैंपस ही थे. दे वर हायरिंग फॉर फुल टाइम रोल्स, नॉट फॉर इंटर्नशिप्स. एंड लाइक कैसा रहता, ट्रेनिंग भी देना पड़ता है ना लोगों, मतलब स्टूडेंट्स को. तो उन्होंने क्या किया, इंटर्नशिप्स निकाला ताकि स्टूडेंट्स ट्रेन हो जाए. मतलब जब तक ग्रेजुएशन होता है तब तक स्टूडेंट अच्छा खासा लाइक टेक्नोलॉजी पे काम करने लगे, उसके बाद में हायर कर ले. सो फर्स्ट दे ऑफर्ड द फुल टाइम रोल, and after that we got our internship offers. Okay, so योगीराज ने वहां से सीख के यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया. या सो और कौन से सेमेस्टर में आई थी ये कंपनीज, लाइक इन परसिस्टेंट फर्स्ट सेमेस्टर में आ गई थी इन द मंथ ऑफ अगस्त, और उर्चलो इन द मंथ ऑफ दिसंबर आई थी. Abbas, the crowd is here from 4th year or 3rd year? It's a mix actually. There are some first year, there are some we are talking about fourth year. Yeah, right. Yeah, they are talking about like 7th or 8th semester. I would say the best time to prepare is that just after you complete your 5th semester, start preparing for company. Like you only got 4 to 5 months before the company will start coming to the campus. So I would say the best time to start. I would say the worst time to start, but best time to late start. The January. Around January, your friends. I think Udemy provides course for around 500 rupees. No, you don't have to buy it. Just grab a coupon from the internet and buy the course for free. Don't need to pay anything. वो तो torrent पे भी available है. Torrent पे available होता है. Okay, so next question is like some of the students are good in a particular domain like artificial intelligence or data science. So what are the chances that we will get a similar position after selection? See, there is a difference between what service-based companies offer and what product-based companies offer. When service-based companies come, they don't give any job description. So what they do is they will hire 100 people, and after you join, you will get assigned to some domains like AI, ML, development. And in development also there is full stack and front end, like such things are there. They do that based on their business needs. They will not see which skills you have done. They will not see your experience. Nothing. They will do on their own. But when products come, they will give you proper job description. And so if you get some companies coming for machine learning people, you can apply that. If you see that like some service companies also offer AI/ML, but getting that role, getting your desired role is you'll be very lucky if you get that. Yeah. Do you have any idea like कौन सी product based company आती है अपने campus में? I think IQ technology is there. दो तो बैठे ही हैं Nvidia और पूछने की जरूरत है. Apart from Nvidia and IQ Tech.
There is शायद Abzuba, then वेरिटास वेरिटास भी शायद किसमें है, प्रोडक्ट में है ना? हाँ product में Veritas भी, ओके but ओके they don't hire for development role, only QA role is there. ओके ओके। और Abzuba नाम की कंपनी है, UBS बैंक है बेसिकली, you have to work in the like banking technology, finance technology. ईशा इस साल शायद तेरा 20 बैच के लिए पबमेटिक भी आई है, वो भी प्रोडक्ट बेस्ड है शायद। Okay. तो है इस बार काफी अच्छा है। मतलब अब्बास, तुम किस बैच से हो? I will pass out in 2024. 24 ना? हाँ, तो बहुत सही सही कंपनी आने वाली, चिंता मत करो। Let's just hope कि सही हो जाए ये। हाँ हाँ। और एक क्वेश्चन था लाइक प्लेसमेंट प्रोसेस कैसा, लाइक सिंहगढ़ का तो पूरा एचटीएस का कॉमन, वो कैसे होता है? लाइक कुछ कुछ रूल्स है। फर्स्ट रूल है इज लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट कंपनी। लाइक जिस कंपनी में हो गए उसके बाद फिर बैठने नहीं मिलेगा दूसरी कंपनी में अनटिल अनलेस जिस कंपनी का ऑफर मिला है और न्यू वाली जो कंपनी है उससे डबल है। मतलब अगर तुम्हारा 5 लाख का जॉब लगा है और कोई 10 लाख वाली कंपनी आ रही है तब बैठने मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तब भी, कभी कभी कैसा होता है पता है क्या? Like I was placed for 5 LPA and another company came for 10 LPA. So मुझे उस कंपनी में भी चांस नहीं मिला था, लाइक क्योंकि जो अपना प्लेसमेंट सेल है वो प्रेफर करता है जिनको प्लेसमेंट हुआ नहीं है उनको ज्यादा प्रायोरिटी दे। तो ऐसा होता है। बट देन देयर इज कंसेप्ट ऑफ ड्रीम कंपनीज। कुछ कुछ कंपनीज को ड्रीम स्टेटस रहता है, तो अगर आपका ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुका है किसी कंपनी में देन कम से कम 2 कंपनीज के ऑफर अपने हैंड में रखो, क्योंकि अभी क्या सीन चल रहा है पता है क्या? यूएस में अभी रिसेशन चल रहा है, उसका इफेक्ट इंडिया में हो रहा है। लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव पोस्टपोन जॉइनिंग डेट्स बाय 4 months, 5 months. Many companies have laid off their new joiners also. So keep at least 2 offers in your hand and like prepare a good resume and all, like वो चीजें आप एक बार ऑनलाइन देख लो, रेज्यूमे कैसे बनता है, उसको कंसाइज कैसे किया जाए, वो चीजें देख लो। Then refer gigs for gigs articles like Yash said earlier. जब भी इंटरव्यू आप देने जाओ सबसे पहले उसका क्या क्या पूछा गया है प्रीवियस स्टूडेंट्स को वो देखा करो। एंड या दैट इज इट। एंड लाइक अगर कुछ और इनसाइट्स चाहिए तो उस कंपनी के जो काम कर रहे हैं फिलहाल लोग, लाइक दोज आर वर्किंग देयर, यू कैन कनेक्ट विद देम ऑन लिंक्डइन and you can ask them about the company also and about the hiring procedure also. Those things you can keep in mind. And for project, I guess what should I say? For project, you can go for any domain. Like there are many domains, but you cannot go for like some you are building some web application, कोई website बना दिया, वैसे projects नहीं चलते. You have to take some domains are like machine learning or blockchain is a domain, distributed systems is a domain. एक एक डोमेन उठाने का, उसके अंदर थोड़ा सा रिसर्च करके आप तुमको क्या अच्छा लगता है, you can work on such projects. लाइक मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है। प्रोजेक्ट्स आप जो कर रहे हो उसको अगर आपके पास टाइम है और जो टाइम मिलता ही है थोड़ा अच्छा कर लो। भले ही आपको क्या बोलते हैं उस प्रोजेक्ट को बनाने में 3 से 4 महीने लगे, बट उस पर काफी डीप में जाके आप काम कर लो, ताकि जब आप इंटरव्यू स्टार्ट हो और आप उस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चालू करें तब आप उसके बारे में इनसाइड आउटसाइड सब कुछ बता दे पाए। लाइक आपको क्या प्रॉब्लम फेस हुई और आपने क्या क्या चीज इसलिए क्या यूज की, क्यों यूज की, इसका यूज केसेस क्या है, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है। तो वो रिक्रूटर को काफी पसंद आता है। लाइक हम भी क्या होता है कंपनी में एक रियल लाइफ प्रॉब्लम पे ही डील कर रहे हैं, इसलिए वो प्रोडक्ट बनाया है। तो अगर वो जो प्रोजेक्ट हमने किया है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम से डील कर रहा है तो काफी सही इम्पैक्ट जाता है इंटरव्यू में। और प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस के लिए मैं एडवाइस दूंगा कि एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो अपनी प्रिपरेशन के साथ, बस। और लेट्स से मुझे एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, द क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट दैट आई एम थिंकिंग बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, लाइक 3 से 4 महीने लग सकते हैं। और इफ आई वांट कि अगर मैं टीम में काम करूं, तो कंपनीज को ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना कि ये नहीं टीम नहीं, ने बनाया है या आपने नहीं बनाया? मैंने जो 2 प्रोजेक्ट मेंशन किए थे अपने रिज्यूमे पे दोनों टीम प्रोजेक्ट्स ही थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यू कैन गो विद, बस अपना कंट्रीब्यूशन बता देना। लाइक तुमने क्या कंट्रीब्यूट किया उस प्रोजेक्ट में अलग से। लाइक ग्रुप में तो काम हो रहा है बट इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या था, और वो उस पार्ट को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करना। ऐसा भी हो सकता है कभी वो काउंटर क्वेश्चन भी कर सकता है और उस समय आंसर नहीं निकले तो वो समझ जाएगा ये गेम कर रहा है। या कॉपी पेस्ट किए। और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए तो आपको like पूरा 1 साल मिल जाता है, you can
हाँ दो वेरी बिग स्केल प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं आप उसमें। हाँ, बट थोड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि वो थोड़ा हाँ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स पीरियड रहता है, क्योंकि जॉब ले लूँ, प्रोजेक्ट कर लूँ या इंटर्नशिप कर लूँ, तो थोड़ा सोच समझ के लेना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। मैं तो बोलूंगा थोड़ा मतलब मिड लेवल टाइप का लेना, एकदम हाई लेवल अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट मत ले लेना जो कभी हो ही ना पाए, फिर बाद में खरीदना पड़ जाए, वो मत करना। Yeah. I think that. Thanks for the answer. So next question, please. Okay. I think first of all, I would like to thank the team for including the memes. So, have you faced any rejection during your placement journey, and how did you handle it? I think Yash, you answered the question. Yogiraj, you? लाइक मेरी जो फर्स्ट कंपनी आई थी ना, लाइक शायद मार्च में एनवीडिया आई थी उस टाइम, तो उस टाइम मेरा उसका ऑनलाइन असेसमेंट नहीं निकला था। और फिर नेक्स्ट कंपनी आई थी इन्फोसिस, उसका भी ऑनलाइन असेसमेंट में फेल हो गया था। उसके बाद थर्ड आई थी इक्यू टेक्नोलॉजिक, फिर उसमें क्लियर हुआ मेरा। तो वो तो चलता रहता है यार। और लाइक मेरा जर्नी तो लो ही स्टार्ट हो गया, मतलब EQ टेक्नोलॉजी और एनवीडिया शायद साथ में आई थी। आई वाज नॉट एबल टू अटेंड, उनके दोनों भी टेस्ट में अटेंड नहीं कर पाया, लाइक ड्यू टू सम रीजंस। एंड आफ्टर दैट आई गॉट प्लेस्ड इन persistent, but then I did not get my desired package. So like it was also a downtime for me. But how I dealt with that is I started preparing rigorously for DSA. I kept consistency, हर रोज चार चार प्रॉब्लम तो करनी है कुछ भी करके, ऐसा किया। और लाइक लॉकडाउन भी था ना यार, तो टाइम बहुत था करने के लिए, तो आई डिड दैट। और रिजेक्शंस आते ही रहेंगे, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि तुम हार मान दो या कुछ ऐसा मत करो। यू शुड कीप ट्राइंग, और जो तुमको पसंद है ना उसमें करते रहो। मतलब कैसा तुमको मोटिवेशन आता ही रहेगा। अगर तुमको डेवलपमेंट पसंद है तो उसमें चार पांच चीजें नई सीख लो, उसमें तुम खुद को डेवलप करते रहो, उसमें तुमको मोटिवेशन खुद ही मिलता रहेगा। Like I would say, COVID lockdown is a gift for 22 batch and a 21 batch. Yeah. College का टेंशन ही नहीं था कुछ, सबमिशन लाइक यू डोंट, देयर हाँ वाज मतलब नो हसल फॉर सबमिशन। राइट, इतना नहीं था, थोड़ा बहुत था, बट इतना नहीं था जितना अभी मतलब ऑन कॉलेज जाके हो रहा है। ऑन कॉलेज इज टफ, इट्स वेरी टफ टफ। टफ, वेरी टफ। पहले तो जगह ही नहीं मिलती उधर जेरोक्स की दुकान पे। राइट। कुछ कुछ खराब काम भी हुए, लेकिन यार लोग ऑनलाइन असेसमेंट में चीटिंग करने लगे बहुत ज्यादा, तो उसमें हाँ भी प्रॉब्लम हो गया बहुत। Oh, तो वो तो है। थोड़ा चीटिंग मत करो, एक सबसे बड़ा है वैसे, कभी भी चीटिंग मत करना उसमें वो ऑनलाइन चीटिंग असेसमेंट कराओ भी मत, कराओ भी में। मत। हाँ। so yeah, I think we will have our Q&A now. या I think Q&A will be live. So please feel free to post your question in the chat box, or one of our team member will be sharing a link. There you can submit your questions as well. और यू कैन जस्ट put your mic on or ask the Yeah, question. we can also do that. Just put your mic and ask the question you want. Sumit is saying community brand did the same, didn't hire half of the students. Oh my god. Community brands आई बहुत थी क्या? कंपनीज ने किया यार। कम्युनिटी ब्रांड्स आई थी क्या उमंग इसमें? नाम की कंपनी आई थी ना, बट वो अच्छा पैकेज दिया था उन्होंने, लाइक हाँ 10 हाँ। लाख कुछ तो दिया था। उन्होंने भी लाइक 4-5 मंथ से पोस्टपोन कर दिया ज्वाइनिंग, तो ओह करेंगे शिट। क्या। What are the community brands? क्या रहती है companies? कम्युनिटी ब्रांड शायद कंपनी का नाम है। कंपनी का नाम है। Oh, yeah. डिड यू So, डन एनी सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनी कोर्स? कोई मतलब नहीं यार पढ़ने जमा करने से, अनटिल अनलेस कोई अच्छा सर्टिफिकेशन हो जिसमें आपने प्रॉपर टेस्ट दिया और उसका लाइसेंस प्रोवाइड हुआ हो। टेस्ट मतलब कि राइट, रेड हैट का जो होता है ना, आप पहले कोर्स करते हो, फिर एक एग्जामिनेशन देते हो उनके सेंटर में जाके, ऑनलाइन जाके, उसके बाद फिर एक पर्टिकुलर आपको सर्टिफिकेशन मिलता है विद एक्सपायरी डेट या फिर लाइफ टाइम के लिए, तो उस टाइप का सर्टिफिकेशन करो। एक AWS का भी आता है, बट अभी करना या नहीं करना फर्क नहीं पड़ेगा। एनपीटीएल मत करो, कोई मतलब नहीं है, बहुत पुराने जमाने वाले कोर्स है, आईआईटी के बुढ़े पढ़ा रहे हैं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन सर्टिफिकेशन करना है तो यार सीख लो उसमें से, अच्छा कोई फुल हाँ, स्टैक का कर लिया तो अच्छे से सीख लो उसमें, रेदर देन मतलब आप खुद कर क्या लो बोलते ऐसा। हाँ, रेदर देन आप क्या बोलते हैं, अच्छे चैनल्स है यूट्यूब पे। पहला तो एक फ्री कोड कैंप, वो काफी अच्छा है, yeah, that's great. उसको फॉलो कर सकते हो। Like there are also many other companies like Microsoft Azure, AWS. Their certifications are लाइक good. अगर आपके स्किल सेट में अगर वो ऐड हो रहा है, लाइक पर्टिकुलर जो अपने डोमेन में काम कर रहे हो, लाइक इफ यू आर
इन डेटा एनालिटिक कोर्स, और AWS का कोई डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो कर लो, बट हेल्पफुल नहीं है तो फालतू में क्या होता है, सर्टिफिकेशन जमा करने के लिए मत करो। Okay, Hardik had some question like, is college compulsory or and do placement give us problems at the time of placements, and what important in curriculum or placement prep? लेकिन लास्ट ईयर मेरे को नहीं लगता अटेंडेंस कंपलसरी होती है। टिल 7th और 8th में इतनी कंपलसरी नहीं थी, क्योंकि हमारा प्लेसमेंट भी चल रहा होता है। बट हमारा कॉलेज नहीं था तो हम बता नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। एससीओई में तो कंपलसरी नहीं है, मेरा सेकेंड ईयर में 30% था अटेंडेंस, कुछ भी नहीं होता। मतलब घर पे कॉल जाएंगे 2-3 बार, लेकिन ठीक है। भाई इतने सच भी नहीं बोल ले रहे। तू मोटिवेट कर रहे बच्चों को। Yeah. ठीक है, पर्स है। Yeah, on slides we have one question like, how much should we know about company we are applying for? लाइक उस कंपनी का ये देख लो कि वो करती क्या है, और जो इंटरव्यू लेने वाला है, मतलब एक आध 2 घंटे पहले पता चल रहा था तो उसका लिंक्डइन चेक कर लो। लिंक्डइन में कभी कभी पता चल जाता है कि वो किस टेक स्टैक में अच्छा है। तो उस अगर आप उस टेक स्टैक में अच्छे हो तो बताओ उसके बारे में, अगर नहीं अच्छा तो फिर अवॉइड करो। Yeah. Next, which courses should we do by taking consideration of current market? Like, गो विथ योर इंटरेस्ट, डोंट फॉलो द मार्केट ट्रेंड, गो विथ योर इंटरेस्ट। फिलहाल तो मार्केट में रिसेशन ही चल रहा है, कहाँ मिलेगा कुछ। people say that कि Java is dying, पर Java अभी भी बहुत कंपनी मैं जावा में ही बहुत काम कर रहा हूँ, मैं जावा में ही काम कर रहा हूँ भाई। हाँ, Like, अभी लाइक यू कैन गो फॉर गोलैंग। गोलैंग बहुत ज्यादा अच्छा है अभी, और एडोब भी बहुत बहुत सारे स्टार्टअप्स उसको अडॉप्ट कर रहे हैं जल्दी जल्दी। तो गोलैंग में बहुत पोटेंशियल लग रहा है फिलहाल। हाँ, गोलैंग भी अच्छा है, जावा भी अच्छा है, लाइक सारे लैंग्वेज अच्छे हैं। कंपनी टू कंपनी मतलब यूज केसेस क्या है उस लैंग्वेज का। यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो यार, कोई भी लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा जो कंपनी कराएगी, ठीक है। वो तो है। एक एक महीने में एक एक फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इंडियन टूल्स है ये बेसिकली, तुमको प्रॉब्लम तो सॉल्व करना है, टूल्स है, टूल तो कभी भी चेंज हो सकता है आपका। हाँ, लैंग्वेज पे तो ज्यादा ध्यान मत दो, वो सिखाते ही हैं फ्रेशर्स को यार। हम फ्रेशर्स हैं, सिखाते ही हैं वो, इतना चिंता मत करो। बस एक लैंग्वेज को मास्टर करो, C++, पाइथन फॉर इंटरव्यू। उसके बाद वो वहां पर जाके सिखाएंगे। और प्रोजेक्ट्स में जिस भी लैंग्वेज पे आप काम कर रहे हो उसको मास्टर मास्टर करो। लाइक मैंने प्रोजेक्ट में पाइथन में किया था तो उसको मैंने मास्टर कर लिया था। और कोर्सेज को एक स्पेसिफिक डोमेन में भी करके देखो, लाइक मशीन लर्निंग का ट्राई करके देखो। तुमको अगर पसंद आता है, यू कैन डेवलप योरसेल्फ इन दैट डोमेन आल्सो। डू सम क्लाउड स्टफ आल्सो, लाइक गूगल क्लाउड का तो अपने कॉलेज का भी रहता है कुछ एससीओ का, उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर लो। मतलब जितने सारे डोमेन्स तुम देख पाओ, एक्सप्लोर कर पाओ, वो सब करके देखो, तुमको हाँ बट खुद को बट आइडिया आ जाएगा हाँ तुमको इंटरेस्ट किसमें है। हाँ बट अगर टाइम है तो मतलब अगर आप ये काम अगर हाँ, फोर्थ ईयर वाला कर रहे हो तो भाई प्लीज। थर्ड ईयर वाले हाँ ही करे बस। हाँ, थर्ड ईयर से पहले वाले, फोर्थ ईयर में आके ये मत करो भाई, पहले जॉब ले लो फिर करते रहना धीरे धीरे। okay, so how much eligibility criteria matter if you had good programming background or internship projects? एक थोड़ा सा गलत क्राइटेरिया ये है कि वो आपके बैकलॉग्स चेक करेंगे पहले, और बैकलॉग चेक करने के बाद वो आपके 10th 12th के मार्क्स चेक करेंगे। लाइक अगर किसी पर्सन को जज करना है तो उसे करंट सिनेरियोस पे करना चाहिए, पास्ट से नहीं करना चाहिए। बट ये है यार डार्क ट्रुथ अबाउट अवर प्लेसमेंट, तो क्या कर सकते हैं। Actually, बी I was रेडी। not able to apply for EQ technology because I had one backlog in my first year. तो राइट, ऐसा इफेक्ट होता है, एक बैकलॉग से भी यार बैठने दे देते अब। लाइक मैं अपने फ्रेंड का एग्जांपल देता हूँ। उसकी 3 बैक थी सेकेंड ईयर में, ठीक है। ईक्यू में नहीं बैठ पाया था, मैंने उसको रेफरल दिया, उसने क्रैक कर लिया, ईक्यू में मेरे साथ आया। सही है। Yeah, ठीक है, I think फिर referral बहुत important है. I will be sending the resume now. या श्योर श्योर, रेफरल बोनस तैयार रखना मेरे लिए। Okay, चलेगा, पहली पार्टी आपको. बिल्कुल बिल्कुल। Yeah, I think और शायद से फर्स्ट जो अभी करंट बैच मीन्स जो थर्ड ईयर में है अभी, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगा कुछ मेंटेन करने का सीजीपीए, क्योंकि पहली सबके 9+ है. हाँ बट ऐसा मत कर लेना कि अभी कॉलेज चालू हो गया तो एकदम चिल होके पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे, थोड़ी पढ़ाई कर लेना, बैकलॉग आ गई तो दिक्कत है। अभी लॉकडाउन में तो कुछ कंपनीज ने अपना लाइक क्राइटेरिया इंक्रीज कर दिया था। जब वेरिटाइज आई थी, उन्होंने जनरली उनका 7.5 सीजीपीए का क्राइटेरिया रहता है, लेकिन इस बार मतलब हमारे टाइम उन्होंने 9.0 का कर दिया था सीजीपीए। सच थिंग दैट। कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया भाई।
Tomorrow is my geo drive. If I pass assessment test, I have to go for interview on the same day. I am a bit nervous for the interview. The interview might be in a person. Please give some suggestion. If you have done the preparation, just talk with them like you are talking with a friend. Like if you want to explain, like if I want to explain something to a boss, I will talk to you as a friend. Just explain them you are a friend of them. Just don't don't be nervous. See, for interview you can do one thing. You can थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो. क्या रिवाइज करना है? गूगल पे थोड़ा सा सर्च करना, स्केलर एकेडमी ओओपी इंटरव्यू क्वेश्चंस. ऐसा तुम सर्च करोगे तो स्केलर एकेडमी का तुम्हारा वेबसाइट खुल जाता है. तो उसमें 40 सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस तुमको मिल जाएंगे, क्या क्या इंटरव्यू पूछते हैं. उससे तुम लाइक रिवाइज कर सकते हैं. उससे कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्ट होएगा. whenever you go to interview, like एक दिन पहले तुम ऐसा थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहना, जो जो सब्जेक्ट तुमको लगता है रिवाइज करना चाहिए. हाँ, इंटरव्यू बिट काफी अच्छा है. मैंने भी वहां से पढ़ा था. ओएस वगैरह हाँ, काफी सही है वहां के ना. टॉप 50 क्वेश्चन एज योगिराज सेड, रेफर कर लेना प्लीज वहां उसके पे. पीडीएफ तुम डाउनलोड करके रखो, लाइक राइट. बहुत यूजफुल आएंगे. और वन मोर थिंग, लाइक इंटरव्यू में लाइक इन पर्सन तो ठीक है, बट जब मेरा ऑनलाइन हुआ था तो मैंने गूगल शीट पे भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी. लाइक यू हैव नॉट गिवन अ पेपर टू राइट एंड शो देम द पीस ऑफ पेपर. सो प्रैक्टिस करना कि गूगल शीट पे आप कुछ क्या बोलते हैं एक्सप्लेन करने का अपने फ्रेंड्स को, ताकि आपको आदत पड़ जाए उस बात की. या फिर आप वो भी यूज करते हैं गूगल ड्राइंग बोर्ड. उस पे क्या होता है, आप यू कैन ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द ट्रीज और द ग्राफ और द एरे. तो वो काफी इजी रहता है. लाइक गूगल शीट में थोड़ा टफ होता है क्योंकि यू कैन ओनली टाइप, बट इन गूगल बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड, यू कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दैट एल्गोरिथम. Okay, तो उस one पर थोड़ा we प्रैक्टिस कर लेना. हाँ. okay. We have one question in the chat. Like 10, 12 के marks check करते हैं. Then what's the criteria for diploma students? सेम मतलब अगर आपने 12th दोनों में से एक करते हैं ना लोग, 11th 12th करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो डिप्लोमा में मिनिमम परसेंटेज आपके इतने रहने चाहिए और 12th में मिनिमम परसेंटेज उतने रहने चाहिए. परसेंटेज क्राइटेरिया विल बी डिपेंड ऑन द कंपनी. नहीं, जनरली 65% ही रहता है, उससे ज्यादा कभी मांगेंगे नहीं 10th-12th में. हाँ, बट अगर हायर है तो अच्छी बात है, नहीं तो. हाँ, हाँ रहता है. So how much weightage does graphs and dynamic programming has in interview? मेरे से डीपी का क्वेश्चन तो नहीं पूछा था, बट ग्राफ का क्वेश्चन पूछा था मेरे से इंटरव्यू में. तो मैं बोलूंगा कि डीएसए में क्या बोलते हैं, हर टॉपिक से आपको आना ही चाहिए. लाइक आप छोड़ नहीं सकते, धीरे धीरे आती जाएगी. आप पहले एरे पे जाएंगे, स्ट्रिंग पे जाएंगे, फिर ट्रीज पे जाएंगे, फिर ग्राफ पे, फिर डीपी. तो धीरे धीरे करते रहो. ऐसा नहीं है कि अगर आपसे डीपी का पूछ लिया और नहीं बना तो ठीक है, उसको बोल दो कि मैंने डीपी अभी तक किया नहीं है. आप दूसरे क्वेश्चन अगर पूछ सकते हो तो पूछ लो. उड़ चलो के ड्राइव में ऑनलाइन असेसमेंट में ग्राफ्स और डीपी पे क्वेश्चन पूछे गए थे, और अच्छे खासे लाइक लीड कोड मीडियम क्वेश्चन के मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे. और इंटरव्यू में ज्यादातर लोगों को ग्राफ पे क्वेश्चन पूछा गया था. यू कैन, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज इन दो ही टॉपिक्स पे रहता, मैंने जितना इंटरव्यूज देखा है उसमें. Okay. So is there any preference for like first preference is given to SUE and SKN, like combine होता है तो कोई preference biasing तो नहीं है ना? कुछ नहीं नहीं, वैसे. कुछ नहीं. आर्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनको इंजीनियरिंग कॉलेज से कोई मतलब नहीं है. इंडिविजुअल कैंडिडेट आ रहा है, ये CSIT वाला या फिर ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, हम इसका इंटरव्यू लेंगे. अच्छा है तो ले लेंगे, नहीं है तो रिजेक्ट. कॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता सेंट्रलाइज प्लेसमेंट में. Okay. Or did you have like extracurricular activities which impacted on your placement? नॉट रियली, आई थिंक. मैंने तो कभी पार्टिसिपेट किया ही नहीं एक्स्ट्रा करिकुलर में, बट मैंने अगर तुम्हारा हाँ, कुछ हॉबी वगैरह है तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन इंटरव्यू पे या प्लेसमेंट पे उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा. ये पार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं आप HR राउंड के लिए. तो ये वाला पॉइंट HR राउंड के लिए, अगर नहीं भी किया तो भी चलेगा, इतना कुछ दिक्कत नहीं है. तो जबरदस्ती मत करना है. डांसिंग नहीं आता लेकिन इंटरव्यू करने के लिए डांसिंग करने चले गए, नहीं वैसा नहीं करना. ऐसा मत लिख देना कि आपको बुक रीडिंग करते हो, फिर वहां पर बुक के नाम पूछे तो बुक के नाम ही पता नहीं है टेक्स्ट बुक के अलावा. वो मत करना. Okay. और आप like आपका ओवरऑल CGPA क्या था? अभी CGPA याद ही नहीं आ रहा भाई. मेरा 8.88 था मेरा शायद. हाँ, फोर्थ एग्रीगेट मेरा CGPA हाँ 8.88 था.
मेरा था 9.15 एट द एंड ऑफ ग्रेजुएशन। Oh my. लाइक लॉकडाउन में बहुत ज्यादा बढ़ गया, वरना 7.5 के अराउंड था मेरा भी। Yeah. Next question is, what made you stand out from the crowd to get selected in the companies? नहीं भाई, हमारे जैसे बहुत है भाई। हम अभी आ गए इसलिए पता है तुमको, हमारे जैसे बहुत हैं, तो कोई क्राउड में इतना कुछ बड़ा काम नहीं किया है। सबसे ज्यादा स्टैंड आउट तुम्हारा कॉन्फिडेंस करेगा, तुम किस हिसाब से बात कर रहे हो, कैसे तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज है, ये चीजें मैटर करेगी। क्योंकि राइट। ज्यादातर स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं, तो यू नो डरना नहीं उनके सामने। वो बहुत फ्रेंडली रहते हैं, इंटरव्यू जो लेते हैं ना, बहुत फ्रेंडली रहेंगे, तुमको कंफर्टेबल फील कराएंगे हाँ, और हेल्पफुल कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस। हाँ, हेल्पफुल रहेंगे और टाइम टू टाइम हेल्प भी करते रहेंगे। आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए तो आपको डांटेंगे भी नहीं, हेल्प करेंगे कि आप किसी चीज में फंस गए, एरर आ रही है तो वो आपको एरर सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ये Yeah. Or can you tell us about like honor courses in college? Like honor courses start with like data science, cyber security, AI, ML. So should we opt for it or not? लाइक एज पर द करंट सिनेरियो मैं तो बोलूंगा यार, अभी फैकल्टी का थोड़ा प्रॉब्लम है तो मत करो अभी। अगर फैकल्टी जब 2-3 साल में ठीक हो जाए, मतलब 2019 बैच के लिए, क्योंकि फैकल्टी भी पढ़ाने के लिए है ही नहीं, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स के लिए फैकल्टी है ही नहीं, तो अवॉइड करो। क्यों एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना है, क्यों ज्यादा पढ़ाई करनी है। नहीं, अगर देखो तुम्हारा इंटरेस्ट है मशीन लर्निंग में और सेल्फ स्टडी करने की तैयारी है तुम्हारी, हाँ इफ यू आर विलिंग देन यू कैन गो फॉर इट। क्योंकि फैकल्टी पे डिपेंड तो रह नहीं सकते। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्यों प्रेशराइज करना है, खुद अपना खुद से पढ़ो ना, मतलब उसको कोर्स में डालने की जरूरत नहीं है, खुद से पढ़ो वो, उसे खुद तुम्हारी प्रोजेक्ट प्लेन बी बनाओ। की डिग्री भी इट इज मोर देन इनफ फॉर प्लेसमेंट्स। हाँ Okay, there is like one question. What are all the points? I think मैं उसे और थोड़ा जनरेट करके बोलता हूँ कि resume को कैसे strong बनाया जाए? Like what are the things that we should add in a resume that it will stand out? लाइक अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, मान लो आप क्या बोलते हैं किसी पर्टिकुलर XYZ कंपनी में अप्लाई करो, उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसके कीवर्ड्स और अपने रिज्यूमे कीवर्ड्स मैच करने के ट्राई करो। और काफी सारी वेबसाइट है जो डिस्क्रिप्शन और क्या बोलते हैं रिज्यूमे के कीवर्ड्स को मैच करती हैं, और उसमें रिजल्ट ट्राई करो कि 70-80% के ऊपर है, तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड और शॉर्टलिस्टिंग द रिज्यूमे विल बी हायर। तो वो कर सकते हो, बट वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट अगर आप कर सकते हो तो स्टैंड आउट करोगे आप शॉर्टलिस्टिंग में। थोड़ा रिज्यूमे को विजुअली अपीलिंग भी बनाना, ऐसा नहीं कि प्लेन बना दिया। राइट। और कंसाइज रखो चीजों को। लाइक इफ यू आर मेंशनिंग अ प्रोजेक्ट देयर, उस प्रोजेक्ट को पहले डिप्लॉय करो कहीं पे और उसका लिंक वहां पे मेंशन कर दो। मतलब जब भी तुम पीडीएफ भेजोगे ना, तो वो रिक्रूटर तुम्हारा खोल के देखेगा। फिर इफ यू आर डूइंग सम कोड शिफ्टिंग, कुछ कोडिंग के अलग अलग कॉन्टेस्ट कर रहे हो, तो उनका लिंक भी तुम मेंशन कर सकते हो उसमें। राइट, और प्रॉपर क्या बोलते हैं गिटहब लिंक्स और प्रोजेक्ट्स के लिंक भी मेंशन कर देना, ताकि रिक्रूटर को पता चल रहा है कि आपने डिप्लॉय भी किया हुआ है। राइट। Yeah. The next question is, we will continue Q&A for like more 10 to 5 to 10 minutes more, and then we will stop our session. Sure. Okay, so next question we have is, should we try for GATE? Should we try for GATE? You can, but I would suggest कि पहले एक जॉब ले लो यार, और गेट की तैयारी अब जॉब के साथ भी अगर कर सकते हो मैनेज, ट्राई कर लो 6 महीना, अगर हो पा रहा है, नहीं तो फिर जॉब छोड़ दो। बट मैं बोलूंगा जॉब भी ले लो और फिर गेट की प्रिपरेशन भी करो। क्यों आइडियल बैठना है, ठीक है। गेट अगर निकलना होगा तो वो तो निकल जाएगा, और आप एक्सपीरियंस के साथ जाओगे तो अच्छी बात है। अगर जॉब मिल पा रहा है तो, नहीं तो गो फॉर गेट ऑब्वियसली। नहीं, अगर पहले ही सोच के रखा है कि गेट करने है तो कर लो। लेकिन कभी भी इंटरव्यू के टाइम बताना नहीं उनको कि गेट का किया है, कुछ किया है। लाइक उनको क्या लगता है ये तो लाइक एक साल में करेगा और एक साल में चला जाएगा हायर स्टडीज के लिए। वैसा कभी गेट के बारे में मेंशन नहीं करना है इंटरव्यू में जनरली। बट इफ यू कैन मैनेज, ट्राई कर लो 6 महीना दे के अपने आप को कि अगर आप यू कैन मैनेज, देन गो फॉर इट। जॉब भी करो और गेट की प्रिपरेशन भी करो, यू कैन मैनेज आई थिंक। Yeah. I have that one question like कि referrals का क्या importance है? Like did they really matter a lot? आपने भाई तो बोल दिया, आपने तो बोला रियल लाइफ एग्जांपल ही हो गया यार, और क्या चाहिए इनको एग्जांपल। कि Okay, so nowadays everyone is saying कि लीड कोड करो कि वो important है क्या इंटरव्यू के ऑफ हिसाब कोर्स, से? ऑफ कोर्स, सब क्वेश्चन सब उधर से ही आते हैं। सब बोल रहे हैं करो करो तो कर ही लो। मतलब आपका गोल क्या है उस पर डिपेंड करता है। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो ये तो एक करना ही पड़ेगा यार इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, भले लीड कोड फिर
कंपनी में जाने के बाद यूज हो या ना हो, बट इंटरव्यू का जो क्राइटेरिया है उसमें तो लीड कोड के क्वेश्चन ही दिखेंगे आपको, या फिर उस टाइप के क्वेश्चन ही दिखेंगे। इंटरव्यू में भी उसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लाइक अगर तुमको सीपी में इंटरेस्ट ही नहीं है तो गो फॉर लीड कोड, क्योंकि लीड कोड इज बेयर मिनिमम टू गेट इनटू कंपनी। और उसमें कुछ चीजें रहती है लीड कोड में, लाइक यू कैन शेड्यूल, लाइक एक प्रैक्टिस इंटरव्यू में तुम शेड्यूल कर सकते हैं, उसमें तुमको 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 आवर का टाइम मिलेगा, सो थोड़ा सा टाइम मैनेज करने के लिए तुमको इजी हो जाएगा। एंड ट्राई फॉर मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चंस, इजी लेवल क्वेश्चन के पीछे पड़ो मत उसमें। राइट। और टाइम टू टाइम मतलब ऐसा हो जाए कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो उसमें आप वापस आओ 1 हफ्ते बाद, फिर से सॉल्व करो और ट्राई टू ऑप्टिमाइज द क्वेश्चन। लाइक उसके एक ही क्वेश्चन के आप 3 3 वे में सॉल्व कर सकते हो। लाइक धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करो। फर्स्ट आपने ब्रूट में किया, फिर ब्रूट ऑप्टिमल में किया, फिर ऑप्टिमल सोल्यूशन किया। तो आपके हर क्वेश्चन के 2 3 अप्रोच होने चाहिए, और टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहो। और उसका डिस्कस सेक्शन भी रेफर करते रहना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन लोग डाल के रखते हैं। लाइक राइट। आप सोच भी नहीं सकते यार, मैं तो इस रास्ते से जा रहा था, इसने पूरा राउंड अबाउट लगा के अलग ही सॉल्यूशन निकल गया। इस टाइप के सॉल्यूशन बनाते हैं लोग, और वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। लीड कोड के अगर क्या बोलते हैं कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट किए हैं तो काफी अच्छे हैं। मतलब वीकली हम्म। वीकली भी होते हैं और बाई वीकली भी होते हैं, तो वो तो स्टार्ट कर देना चाहिए। मतलब काफी अच्छा है। और उसके एडिटोरियल के बाद, मतलब जस्ट आफ्टर दी क्या बोलते हैं कॉन्टेस्ट, यू विल गेट द एडिटोरियल इन द डिस्कशन सेक्शन एज मेंशन बाय योगीराज। और उसमें अगर कॉइन्स तुम्हारे बहुत सारे हो गए तो शर्ट भी मिल जाएगा। Yogiraj, I think we need to prioritize the code chef over lead code. No, so कुछ नहीं Right, right. है। कुछ नहीं, that's nothing like that. Okay, can you suggest some resources like that will help apart from like lead code, GFG? Is there any other resources that will help? वो इंटरव्यू बिट वाला एक है, लाइक उसके पीडीएफ अवेलेबल रहेगा। और तो लाइक दिस इज इनफ, आई थिंक। देयर इज अनदर वेबसाइट कॉल्ड इज एम्बिशन बॉक्स, उस पे भी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं। राइट। और और एक मैं और बोलूंगा, कभी कभी ऐसा होता है कि वो कंपनी का में कोई सीनियर नहीं है, तो लिंक्डइन में जाके आप क्या बोलते हैं, आप अपने कनेक्शंस में देख सकते हैं कि उस कंपनी में कोई बंदा है कि नहीं। और ट्राई करना कि जो रिसेंटली भी प्लेस्ड हुआ है, मतलब 1 आध 2 साल में, उससे आप पूछे, क्योंकि जो पुराने वाले होंगे वो पुराने अपने स्टाइल से बताएंगे जो उनके टाइम में इंटरव्यू हुए होंगे। और इसलिए मैं बोलूंगा लिंक्डइन में ना हर कंपनी से एटलीस्ट आपके 10 से 15 कनेक्शंस होने चाहिए, रेदर देन आप उस टाइम बनाए। लाइक मैं बोलूंगा, अगर अब्बास अभी क्या बोलते हैं 3rd ईयर में है और उसको गोल है कि उसको गूगल में प्लेस होना है, तो मैं बोलूंगा कि कम से कम उसके क्या बोलते हैं कनेक्शन लिस्ट में 100 से 150 गूगल वाले होने चाहिए, इंक्लूडिंग एचआर, रिक्रूटमेंट ड्राइव वाले और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ताकि वो एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग वो रेफरल इजिली ले पाए, रेदर देन सेंडिंग द कनेक्शन रिक्वेस्ट। कोई कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर एक्सेप्ट होंगे और फिर कितने लोग भाव देंगे, ये सब चल। तो पहले से ही क्या बोलते हैं कनेक्शन बना के रखो हर कंपनी के साथ, कम से कम 10 से 15 लोगों के साथ उस कंपनी के, तो काफी आपका टाइम बचेगा। आप डायरेक्ट आप रेफरल एक मैसेज भेज पाएंगे अपने रिज्यूमे और आपको तुरंत रेफरल मिल जाएगा। Okay, so I think we will stop here for now या because time is yeah, just give me a second. श्योर। Uh, so all the people who are in the meeting, please fill the feedback form. I will be share people. Our team will be sharing it on WhatsApp as well as I'm sharing it on the chat. Feel free to connect to our Instagram, LinkedIn, or Discord server. And if you haven't joined any WhatsApp, we have shared the link as well in the form. Feel free to join. It's been great talking to you, Yash and Yogiraj. Thank you अब्बास, for again. वन मोर थिंग, Yeah. जस्ट पुट मी एंड क्या बोलते हैं योगीराज का लिंक्डइन ऑन द Oh डिस्क्रिप्शन yeah, yeah. एंड Just give me a या second. Just give me a guys, second. you can connect me and Yogiraj on the LinkedIn. I'm putting my LinkedIn profile in chat. थोड़े बहुत जो डाउट रहेंगे वो सॉल्व कर सकते हैं, हाँ नो प्रॉब्लम। योगीराज, मैं तेरा भी डाल देता हूँ। हाँ, डाल दिया क्या? गुड, ग्रेट। I think मैं मेरा भी डाल देता हूँ ताकि थोड़े मेरे भी connections बढ़ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। वो किसी ने एक AIML का क्वेश्चन पूछा था, कौन सी कंपनीज आती है। जनरली कोई भी कंपनी AIML के लिए या डेटा साइंस के लिए बट हायरिंग नहीं करती अपने बट कॉलेज में। मैं बोलूंगा कि अगर आप उस कंपनी अच्छी लग रही बैकग्राउंड, तो एक बार क्या बोलते हैं आप पूछ लेना रिक्रूटर से कि आप क्या रोल है कि नहीं है। लाइक मैं हमारे यहाँ एसकेएन में ही एक, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, एक बंदा है शायद एससीओ में है वो,
तो EQ टेक्नोलॉजी कौस्तुभ चौधरी वो डेवऑप्स में चला गया। राइट करेक्ट। हाँ तो उसने क्या बोलते रिक्रूटर से खुद पूछा था और वो डेवऑप्स में चला गया रेदर देन सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, क्योंकि उसका इंटरेस्ट था। तो आप पूछ लो एक बार रिक्रूटर से। बट जनरली AIML और डेटा साइंस के लिए कंपनीज लाइक मास्टर्स या PhD की डिग्री प्रेफर करते हैं, लाइक जो अंडर ग्रेजुएट रहते हैं उनके लिए ज्यादा ओपनिंग्स रहती नहीं है। तो आप एक बार इवेल्यूट करके देख लेना, अगर इंटरेस्ट रहे तो हायर स्टडीज के लिए चले जाना। राइट। और आप दोनों ने कभी लाइक हायर स्टडीज का सोचा है कि लाइक वी विल गो फॉर हायर स्टडीज और नॉट? नहीं, हायर स्टडीज के लिए जाने के लिए पहले तो एक क्यूरियोसिटी चाहिए, कोई तो एक टॉपिक में, और सीखने की ज्यादा इच्छा चाहिए। दोनों चीजें मेरे पास तो नहीं है फिलहाल, इसलिए आई नेवर थॉट अबाउट दैट। बट if I get a chance, I would like to go for MBA in a foreign country, because वहाँ पे रह के थोड़ा बहुत कैसे सोचते हैं बाकी लोग, उनके भीतर रह के अपने को थोड़ा सा लाइक अपना नॉलेज बढ़ेगा। So from that point of view, it is good. Yeah. So I think we don't have any more questions now. Right. Thank you everyone for joining. You can leave the meeting now. Yeah. Bye everyone. Have a great Sure, day. thank you. Great talking to you. Yeah, It was a it's great great talk. talking to you. Thank you, sir.